It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. So hi guys, welcome to our YouTube live session, and in this series of YouTube live sessions we'll be discussing about engineering mechanics. Engineering mechanics, which is a very beautiful and is a very basic concept or a subject of mechanical engineering. Engineering mechanics बहुत ही core subject है. The reason being the complete understanding of engineering depends upon how good you are at engineering mechanics. So here we'll be learning engineering mechanics every day at 4 o'clock live, and in the upcoming few days we'll be covering the entire syllabus of engineering mechanics. Before going into the discussion, I'll brief about myself. I am Aditya Gupta, All India rank 5 in the Engineering Service Examination of 2013. I have worked with Indian Railways for 2 years as an IAS officer in the Indian Railway Store Services. I have cracked all these PSUs and everything in my very first attempt. I have worked with HPCL as well. I'm the founder and director of an institute and I have a teaching experience of more than 5 years. I teach live on the Unacademy Plus platform. So this is all about me guys. And today this is the first session on engineering mechanics. तो हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे सबसे पहले engineering mechanics स्टार्ट करने से पहले. So first of all we'll discuss how important is engineering mechanics and what we'll be doing in this series on engineering mechanics. तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि engineering mechanics एज ए सब्जेक्ट क्या है और हम लोग engineering mechanics में किस प्रकार से यहाँ पे YouTube पे इसको स्टडी करने वाले हैं. सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक कोर सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बात करें तो डायरेक्टली इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स लाइक फोर्सेस, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस, ट्रसेस, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, रोलिंग मोशन, रोटेशनल मोशन एंड मल्टीपल अदर टॉपिक्स जिन पे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं. सो डायरेक्टली सीधे सीधे अगर हम लोग बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स एवरी ईयर आपको गेट एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 100 मिलेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर. राइट, दिस इज डायरेक्ट 8 मार्क्स जो कि डायरेक्टली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एज अ सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा. ठीक, इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं सो इनडायरेक्टली सिंस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको फंडामेंटल्स बताता है कि पूरी इंजीनियरिंग में जो फोर्सेस हैं, जो मोमेंट्स हैं, जो जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब इनका रियलिस्टिक सिग्निफिकेंस क्या है और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड हाउ दे आर वेरिंग इन अलग डिफरेंट सिनेरियोज. इनडायरेक्टली अगर आपकी बात करें तो 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर सकता है इन द गेट एग्जामिनेशन ओनली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. क्योंकि अगर आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्ट्रांग है तो आप बाकी सब्जेक्ट्स को बेटर तरीके से समझ पाएंगे, उनके न्यूमेरिकल्स को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे और अच्छा स्कोर करने में केपेबल रहेंगे. सो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कैन क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ 15 to 18 मार्क्स.
राइट। सो बहुत ही कोर, बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बेसिक सब्जेक्ट है। सो मैं ये बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही पढ़ना चाहिए। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इन दिस सीरीज ऑफ यूट्यूब लाइव सेशंस विच विल बी कंडक्टेड every day at 4 p.m. Daily we'll be learning about one topic. Today we'll be learning the basics of rest and motion, 10th of December. Tomorrow on the 11th of December we'll be learning about motion in one dimension. On the 13th of December we'll be learning about motion in two dimension. Next we'll be learning about equilibrium and Lami's rule. विल बी लर्निंग ट्रसेस ऑन द 15th of December, जहाँ पे ट्रसेस का मेथड ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। 16th of December को भी हम लोग ट्रसेस पढ़ेंगे, बट विल बी लर्निंग अबाउट मेथड ऑफ सेक्शन। सो टू एनालाइज ट्रसेस वी हैव टू मेथड्स, मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस, एंड डेफिनेटली इट इज डेफिनेट कि अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ट्रसेस के ऊपर ही मिलता है। ओनली ऑन द टॉपिक ट्रसेस यू विल एक्सपेक्ट 2 to 4 मार्क्स every year. Definite है, this is definite, right? चलिए next we have Newton's laws of motion on 17th of December. You have friction on 18th December. 19th of December we'll be learning about equation of motion. 20th December we'll be learning about work energy theorem. 21st collision. 22nd circular motion. Then we'll be learning about pure rolling on 23rd. We'll be learning about moment of inertia, centroids and various other concepts on 24th. And on the 25th of December, we'll be learning about the simple harmonic motion. So this will be our agenda for the next upcoming days. And these sessions will be conducted live. देखिए लाइव का एक अपना अलग मजा है ना। लाइव से रेगुलरिटी बनी रहती है, प्लस इंटरेस्ट डेवलप होता है, and you get to interact with the best educators of India, not just in this session, in every session that you attend live on the channel, right? So live की अपने benefits हैं, so definitely try to attend these sessions live. So these sessions will be conducted every day at 4 p.m. The sessions will be approximately of 45 minutes only, so you can take out such a small fraction of your time from your day and give it to engineering mechanics, which creates a whole lot of a difference in your preparation, right? So as well, यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ करना चाहूँगा कि on 16th of December we are coming up with Unacademy Combat. Unacademy Combat is a huge, as the name says, combat for GATE 2021. So Unacademy Combat will consist is basically a test इन द सेंस ऑफ ओलंपियाड्स, इन द लेवल ऑफ ओलंपियाड। जैसा कि ओलंपियाड होता है वैसे ही हम लोगों ने गेट के लिए रखा है एक गेट कॉम्बैट एग्जाम, जहां पे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, राइट? नॉट जस्ट दैट सिंपल क्वेश्चंस जो कि हर कोई कर सकता है। दीज विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूजफुल एंड चैलेंजिंग क्वेश्चंस, राइट? जिससे आपके टेक्निकल स्किल्स डेफिनेटली चेक होंगे थ्रू आउट इंडिया। So this is a all India, pan India exam, Unacademy Combat, and आपके टेक्निकल स्किल्स, आपकी प्रिपरेशन, आपका पेशेंस, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, एक्यूरेसी, कैलकुलेशंस, सब कुछ चेक करेगा दिस टेस्ट ऑफ योर्स। दिस टेस्ट Unacademy Combat was happening on the 13th of December earlier, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन्स कुछ एग्जाम्स आ रहे थे 13th of December को, एंड इट वॉज रिक्वेस्टेड बाय मल्टीपल स्टूडेंट्स कि यू हैव एग्जाम्स ऑन दैट डे, सो हम लोगों ने उसको रीशेड्यूल किया है टू द 16th of December 6 PM. सो Unacademy Combat अब होगा 16 December को 6 PM पे, एंड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। ये ना सिर्फ आपके टेक्निकल नॉलेज को चेक करेगा, इट विल ऑल्सो प्रोवाइड यू रिवॉर्ड्स। यस, the first one is Apple MacBook, the first prize. Second prize is iPad mini. Third prize is AirPods and 1000 rupees Amazon vouchers for the top 100 rankers. So these are the rewards that you will be getting on Unacademy Combat exam. So Unacademy Combat is India's largest fortnightly competition for GATE. So this will be repeated again and again.
with new questions, with new and interesting questions, जो कि हर fortnightly conduct किया जाएगा, and this will be conducted first on 16th of December 6 p.m. Challenging GATE questions created by the best of educators, super fast and fun with real-time rankings, compete with the best, detailed video solutions by the top educators of India. So for attempting this Unacademy Combat, you need to register it. So you can register it by going on the Unacademy Plus platform, या you can also go to the Unacademy app and register for it. नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक के नीचे आपको इसके लिए लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके इसको रजिस्टर कर सकते हैं. एंड रजिस्टर करते वक्त अगर ये आपसे अनलॉक करने का कोड पूछता है, सो यू कैन यूज अनलॉक कोड ESE5 live. So you can use this code ESE5 live, which will help you unlock these exams. This code will also help you unlock free special classes on the Unacademy platform. So ये कोड की मदद से ना सिर्फ आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, इस कोड की मदद से आप फ्री टेस्ट के साथ साथ जो फ्री क्लासेस होती हैं Unacademy पे उनको भी अटेंड कर सकते हैं, राइट. सो Unacademy प्लस आपसे अनलॉकिंग कोड पूछता है, तो यू कैन यूज दिस कोड ESE5 लाइव, राइट. सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ अपने नॉलेज को चेक करने की, बल्कि है ना रिवॉर्ड्स भी पाने की. सो दिस इज आवर एजेंडा, दिस इज द इम्पॉर्टेंस दैट आई डिस्कस्ड कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, एंड रियली अ कोर सब्जेक्ट. दिस आर द एजेंडा फॉर द अपकमिंग डेज. To unlock, use code ESE5 live to unlock free classes and quizzes on the Unacademy platform. So let us start with the first lecture of engineering mechanics, जहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं about rest and motion. So we'll be learning about rest, we'll be learning about motion. When do we say that a body is at rest? कब बोलते हैं हम कि a body is at rest? Very common terms है ना, लेकिन कई बार डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, और यही दिक्कत होती है इंटरव्यूज में, है ना. आपको पता है बट यू कैन नॉट एक्सप्रेस योर सेल्फ, है ना. आता है, ऐसा नहीं कि आता नहीं है, बट एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है कई बार. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ बॉडी इज एट रेस्ट? अ बॉडी इज एट रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी at rest if its position do not change with time. A body is said to be at rest if its position do not change with time. अगर समय के साथ बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं करती है, सो हम बोलते हैं कि वो बॉडी रेस्ट पे है. What are the examples of bodies at rest? Statue of Unity, right? Taj Mahal, right? Eiffel Tower, yes. Bodies at rest, your house. So we can have multiple bodies at rest. We can have multiple bodies at rest. Now what is motion? What is motion? When do we say that a body is in motion? If the position of body, a particle, changes with time, we say that the body is in motion. We say that the body is in motion. If the position of the particle changes with time, we say that the body is in motion, right?
So what are the examples of bodies in motion? What are the examples of bodies in motion? A flying plane, a plane which is flying. Yes, a moving train. Etc. can be examples of bodies in motion जहाँ पे position of the body or the position of the particle is changing with time. समय के साथ उसकी जो position है अगर change करती है, we say that the body is in motion. So this is how we define rest and this is how we define motion. But if I say that the Statue of Unity or the Taj Mahal is at rest, if I say that the Statue of Unity or the Taj Mahal is at rest, मैं अगर मून से देखता हूं, here I am saying that the Statue of Unity or Taj Mahal is at rest, ठीक है, मैं अर्थ से देखता हूं तो मुझे दिखता है कि ताजमहल एक ही जगह है, वो चेंज नहीं कर रहा अपनी पोजीशन. बट व्हाट अबाउट आई लुक इट फ्रॉम द मून? व्हाट अबाउट आई लुक इट फ्रॉम मार्स? अगर मैं जाके मून पे से, मार्स पे से या कहीं और से जाके अगर मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखूं, अगर मैं ताजमहल को देखूं, सो दे विल बी मूविंग. अगर मैं मून से जाके देखता हूं, फ्रॉम द मून इफ आई लुक एट ताजमहल, व्हाट आई विल से दैट द ताजमहल इज मूविंग, है ना? तो मैं बोलूंगा कि ताजमहल मूव कर रहा है. तो अब मुझे बताइए ताजमहल रेस्ट पे है या मोशन में? Now tell me, the Taj Mahal is now at rest or in motion? Rest and motion are dependent upon the frame of reference, कि आप कहां से देखते हैं, है ना? So rest and motion are dependent upon frame of reference. Rest or motion depend upon the frame of reference. So frame of reference plays a very important role while studying engineering mechanics. Engineering mechanics पढ़ते वक्त frame of reference बहुत important role play करता है, क्योंकि सब चीज़ें depend कर जाती हैं frame of reference से कि आपको वो objects कैसे दिखाई देंगे, right? So from moon, if we look at moon from the point of view of moon or the frame of reference of moon, we will say that Taj Mahal is in motion, क्योंकि पूरी अर्थ घूम रही है उसके हिसाब से. लेकिन अगर अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बोलता हूं तो मैं बोलूंगा ताज महल इज एट रेस्ट. सो देयर इज नथिंग इन एब्सोल्यूट रेस्ट or motion. So there is nothing in absolute rest or motion. Everything depends upon the frame of reference. Yes, everything depends upon the frame of reference. For example, बाहर से देखने पे ऐसा लगेगा कि एक ट्रेन मूव कर रही है. From outside, if we'll look at a train, we'll say that the train is moving, है ना? And two people sitting in the train will say both of them are moving. अगर दो लोग एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है तो what will say कि both the people are moving. वो दोनों लोग मूव कर रहे हैं along with the train, right? Right? But अगर मैं ट्रेन में बैठे हुए एक पर्सन के रिस्पेक्ट में मैं दूसरे पर्सन को पूछता हूं, इफ आई आस्क पर्सन ए कि जो पर्सन बी है, बोथ ऑफ देम सिटिंग इन द ट्रेन इन देयर पोजीशन, इफ आई आस्क पर्सन ए दैट पर्सन बी मूव कर रहा है कि रेस्ट पे है, सो वो कहेगा कि द पर्सन बी इज एट रेस्ट.
है ना। सो अगर एक ट्रेन चल रही है, उसमें बैठे हुए एक आदमी से आप पूछोगे कि दूसरा आदमी मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, तो वो बोलेगा कि रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा. It depends upon the frame of reference. Yes, so frame of reference is a very important thing from engineering mechanics point of view. Now let us discuss about motion. Motion, as we say, when the position of the body or the particle changes with time, we say that it is moving, right? Motion can be categorized into multiple ways. We can have motion in one dimension. We can have motion in two dimension. We can have motion in three dimension. Yes, the motion of a body can be in one dimension, the motion of a body can be in two dimension, and the motion of a body can be in three dimensions. What do we mean by motion in one dimension? One dimension का मतलब है motion in a straight path. Motion in a straight path. So this is x-axis, this is y-axis. A particle moving like this. ये एक पार्टिकल मूव कर रहा है ना. दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन. ये क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन. वन डायमेंशन. अ पार्टिकल मूविंग लाइक दिस. दिस इज ऑल्सो मोशन इन वन डायमेंशन, है ना. राइट, राइट. बट वॉट अबाउट अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग दिस स्ट्रेट पाथ. A particle moving like this. This is motion in one dimension or two dimension? ये one dimension motion है और two dimension motion है. This is motion in one dimension or motion in two dimension? ये तो motion in one dimension है, ये भी motion in one dimension है. ये motion in one dimension है या two dimension है? This is motion in one dimension or in two dimensions. What is it? What is it? So here this body is having motion in one dimension. तो ये जो motion कर रहा है body along this path is also a motion in one dimension. Now why this is motion in one dimension? ये motion in one dimension क्यों है? एनीबडी, कोई बताएगा मुझे वाई दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन? आप में से कोई ट्राई करेगा कि हम लोग इस मोशन को वन डायमेंशन कैसे बोल रहे हैं? एक बॉडी जो कि इस पाथ के अलोंग मूव कर रही है, हाउ दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन? दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन माय डियर, बिकॉज दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन बिकॉज क्या आपको अपने घर से कहीं कोई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पास होती हुई दिखाई देती है? कैन यू सी अ एक्स एक्सिस और अ वाई एक्सिस अराउंड योर सेल्फ? कहीं आपको अपने अराउंड दिखाई देती है क्या? नहीं. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर समथिंग दैट वी डिफाइन. सो आई कैन से, है ना, दिस टू एक्सिस, these axes are x axis and I can say this is y axis. मैं अपने हिसाब से किसी भी एक्सिस को x बोल सकता हूँ, किसी भी एक्सिस को y बोल सकता हूँ. और अगर अब मैं देखूं तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये एक ही एक्सिस में मूव कर रहा है, राइट. सो अ मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ इज सेड टू बी वन डायमेंशन मोशन. जरूरी नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल मूव करे या वर्टिकल मूव करे तभी हम उसे वन डायमेंशन मोशन बोलेंगे. अगर वो किसी भी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, अगर वो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, सो वी विल से दैट द बॉडी इज अंडरगोइंग अ वन डायमेंशन मोशन, राइट. राइट.
चलिए, now what is motion in 2 dimension? A body moving in a plane is an example of motion in 2 dimension. If a body is moving in a plane, we say that the motion is in 2 dimension. है ना? कोई example? A car moving on a flat plain ground, a car moving on a plain ground, a bike moving on a plain ground, we walking on a plain ground, right? Cheetah walking on a wall, है ना? An ant walking on a wall. Yes, that is what is motion in 2 dimension. जब आपका motion जो है एक plane पे limited है, the motion is limited to one plane, not a straight line, not in a straight line. Randomly moving in a plane is what is motion in 2 dimension is. What is motion in 3 dimension? Motion in space. So when a body like a mosquito is flying in your room, a mosquito flying in your room is an example of a motion in 3 dimension. A mosquito flying in a room. Is an example of motion in 3 dimension. An airplane flying is an example of motion in 3 dimension. अगर एक plane fly करता है तो it is an example of motion in 3 dimension. Space में 3 dimension में motion करना. Yes, yes. Right, so we can categorize motion as motion in 1 dimension, we can categorize motion as motion in 2 dimension and 3 dimension. Similarly, we can categorize motion as uniform motion. Uniform motion मतलब कि जहाँ पे velocity is constant. If a body is moving with a constant velocity, if a body is moving with a constant velocity, for example 30 km per hour, ना 31 जाएगा ना 29 जाएगा. If it is moving with a constant velocity of 30 km per hour, then that motion will be a motion, a uniform motion, a motion with constant velocity. A motion with constant velocity, right? Second can be uniform acceleration. Uniform acceleration means acceleration is constant. When the body is accelerating at a constant rate, when the acceleration is constant, when the rate of change of velocity is constant, we say that the body is moving with a uniform acceleration. For example, the acceleration of the body is 2 meters per second square. 2 meters per second square. So हम लोग दोनों केस देख लेते हैं. Velocity is equals to constant मतलब कैसा? Time t equals to 0 पे 30 km per hour, 1 second पे 30 km per hour, 2 seconds पे 30 km per hour, not changing, है ना? Not changing. 30 km per hour.
वेलोसिटी इज कांस्टेंट. नाउ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट की बात करते हैं. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट का क्या मतलब हो सकता है? टाइम t इक्वल्स टू 0 पे अगर वेलोसिटी 0 है, so time t equals to 1 second पे there will be 2 kilometer per hour. For example, acceleration is 2 kilometer per hour square. So the velocity is changing at a constant rate, है ना. The velocity is changing at a constant rate. यहाँ पे velocity हो जाएगा 2 kilometer per hour. At t equals to 2 seconds, again 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, वेलोसिटी विल बी 4 किलोमीटर पर आवर. पर सेकेंड या है ना पर आवर की अगर मैं बात करूं, पर आवर द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. यस यस. चलिए आगे बढ़ जाएं. Now the third type of motion can be non-uniform acceleration. Where the body is accelerating but the acceleration is not constant. The body is having some acceleration but that acceleration is not constant. We say that the motion of the particle is of non-uniform acceleration. कि हमारा जो particle है उसका motion non-uniform है. The motion is non-uniform. कभी 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के रेट से एक्सेलरेट कर रहा है, कभी 8 के रेट से, कभी 6 के रेट से. यस. सो अगर हम लोग बात करें तो जनरली जो हम लोग ड्राइव करते हैं, जनरली जो हम लोग अगर बाइक चलाते हैं, सो इट इज़ अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. कभी हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, कभी एक स्टेडी रेट पे एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, कभी ब्रेक लगा रहे होते हैं सडनली तो सडन डी एक्सेलरेशन होता है, कभी हम एक्सेलरेशन देते हैं तो सडनली बॉडी एक्सेलरेट करती है. सो वी हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो जब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जब हम लोग ड्राइव करते हैं बॉडीज, है ना, कार बाइक्स, सो दैट इज अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. राइट. Motion can also be categorized as translation, rotation, and general motion. A motion can be categorized as translation, rotation, and general motion. What is translation, what is rotation, and what is general motion? A body is said to translate. कोई body translation कब बोलते हैं? जब every point on the body has same velocity, we say that the body is translating. If every point on the body has same velocity, we say it is translating. जब every point on the body, when every point on the body has same velocity, we say that it is translating. Translation can be of two types: rectilinear and curvilinear. So translation can be of two types: rectilinear and curvilinear. Rectilinear का मतलब होता है in a straight line. In a straight line. सो अगर ये बॉडी 30 या 40 कोई भी 40 मीटर्स पर सेकेंड से चल रही है, सो एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी हैज़ द सेम वेलोसिटी 30 30
30, 30. Every point on the body has same velocity, 30, 30 meters per second, 30 meters per second, 30 meters per second, 30 meters per second. Yes, yes. Yes, so if every point on the body is moving with the same velocity, we say that the motion is translation. ट्रांसलेशन मोशन के अंदर भी कैटेगरीज हो सकती हैं. रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, then we say that the body is having rectilinear motion. Curvilinear on the other hand means a body is moving on a curved path. It could be any curved path, na? ऐसा. A body moving on a curved path, for example like this, 10 meters per second. So every point on the body has the same velocity, 10 meters per second. 10 meters per second, 10 meters per second. But it is moving on a curved path, like a roller coaster ride, like a roller coaster ride, like a roller coaster ride. Yes, curvilinear motion, but an example of translation. ठीक है, so translation can be of two types, rectilinear and curvilinear. Rectilinear and curvilinear. Next we talk about rotation. What is rotation? Rotation, on the other hand, I'll just explain it to you if I get some shapes. For example, this disc over here, is rotating about some axis, This disc over here is rotating about some axis. Yes, with an angular velocity omega. So every point on the disc is rotating about one given axis. Yes, every point on the disc have different velocities. A point omega RA, B point omega RB. So points on the disc have different velocities. The complete body is rotating about a given axis. Then that case is known as rotation. Yes, if the body rotates about a given axis, this is what is rotation is. Chale, hi Asif, how are you? When the body rotates about a given axis, we say it is rotation. Clear? यहाँ पे हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी. So center has zero velocity. A की कुछ ओमेगा आर है हो जाएगा. R is the distance from the center. B point, अगर मैं इस पॉइंट को B बोलता हूँ तो this will be omega RB, the velocity, right? So points on the bodies have different velocities. The complete body is rotating about a given axis. Yes, like a pulley, no? A pulley rotating on a shaft, a flywheel rotating on a shaft, a gear rotating on a shaft, that are rotation motion. वो rotate कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो शाफ्ट की एक्सिस, a fixed axis in space के अबाउट वो बॉडी घूम रही है.
It is rotating. Pulley, flywheel, gear, etc. mounted on a shaft are examples of rotation motion. Yes. Next we can have general motion. General motion is a combination of translation and rotation, right? For example, if I have a disc, and this disc or a wheel like a wheel of the cycle or car, अब ये व्हील क्या होता है, ये व्हील घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है ना, ये व्हील घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, राइट? सो ये आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, ये आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है ना? दिस इज नॉट प्योर ट्रांसलेशन, क्योंकि हर पॉइंट बॉडी पे जो है उसकी वेलोसिटी सेम नहीं है, राइट? दिस इज नॉट प्योर रोटेशन एज वेल, क्योंकि कोई फिक्स्ड एक्सिस इन स्पेस के अबाउट ये नहीं घूम रहा है. इट इज नॉट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इन स्पेस. दिस इज अ जनरल मोशन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, जहां पे ये बॉडी रोटेट भी कर रही है. द बॉडी इज रोटेटिंग एज वेल एज द बॉडी इज ट्रांसलेटिंग. सो दिस इज व्हाट इज जनरल मोशन, और इसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन. Rolling motion is an example of general motion. Yes, clear है everybody? चलिए, so we discussed about various categories or types in which motions can be classified as 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, uniform motion, uniform acceleration and non-uniform acceleration, translation, rotation and general motion. Translation, rotation and general motion. Right? चलिए, so I'll ask you one question. So this is some circular track. This is some circular track. This is some circular track. And you are walking on it. You are walking on it. Now you are walking on this circular track. Right? Right? So you are walking on this circular track. So this is an example of circular motion. This is an example of circular motion. This is what is known as circular motion. This is what we call a circular motion. Now circular motion इनमें से किस कैटेगरी में आएगा?
सर्कुलर मोशन अब कोई एक नए प्रकार का मोशन नहीं है. सर्कुलर मोशन इज नॉट सम न्यू काइंड ऑफ अ मोशन, है ना, जो कि इसके अलावा और ऐड किया जाए, राइट. सर्कुलर मोशन इज कमिंग अंडर ट्रांसलेशन और रोटेशन और जनरल मोशन. इन तीनों में से किसी एक के अंदर आपको उसे प्लेस करना पड़ेगा. सो सर्कुलर मोशन इज नॉट अ फोर्थ काइंड ऑफ मोशन. सर्कुलर मोशन आप इनमें से किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? विल यू कॉल सर्कुलर मोशन टू बी अ ट्रांसलेशन मोशन, or you will call circular motion to be a rotation, or you will call it a general motion. आप सर्कुलर मोशन को कहाँ प्लेस करेंगे? What motion is circular motion? What motion is circular motion? कहाँ प्लेस करेंगे? So circular motion is a type of translation. So यहाँ पे आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, So circular motion is translation motion. अब आप जब सर्कुलर पाथ पे चल रहे हो तो आप वॉक तो ऐसे सीधे ही करते हो ना. आप कैसे वॉक करते हो? For example 10 kilometer per hour. For example, you are walking at 10 kilometer per hour. जब आप 10 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहे हो तो आपकी पूरी बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रही है. तो आपकी पूरी बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर के रेट से वॉक कर रही है. यस, सो दिस इज अ ट्रांसलेशन मोशन. सो सर्कुलर मोशन इज अ ट्रांसलेशन मोशन. आप सभी लोगों को क्लियर है? यस, ग्रेट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट सेशन ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो हम लोगों ने आज चालू किया. इसलिए आज बहुत ज़्यादा ना लेते हुए हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, बट वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार हमें ये क्लासिफिकेशन ही क्लियर नहीं होती कि किसे ट्रांसलेशन बोलते हैं. व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन, व्हाट इज कर्विलिनियर मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज रोटेशन, व्हाट इज जनरल मोशन और द रोलिंग मोशन. यस, सो आज हम लोगों ने बात करी व्हाट इज रेस्ट, हम लोगों ने बात करी व्हाट इज मोशन, what is the importance or the significance of the frame of reference, and what are the various types in which motions can be classified. Very fundamental session. कल से हम लोग चालू करेंगे motion in one dimension. So tomorrow onwards we'll be talking about motion in one dimension. Yes, every day we'll be conducting the class at 4 o'clock. Unacademy Plus पे free live classes and free quizzes को अनलॉक करने के लिए यूज कोड ESE5 लाइव. सो यूज कोड ESE5 लाइव टू अनलॉक फ्री क्लासेस एंड क्विजेस. अनअकैडमी पे ऑन 16th of December we are coming up with Unacademy Combat, which is a very high level of exam or a test kind of, which test your preparation for the GATE 2021. राइट, क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल्स के होंगे. ये एक ऑल इंडिया बेस्ड टेस्ट है जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर पाओगे. दिस इज़ अ वेरी 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 यूजफुल थिंग. एंड ये सिर्फ आपके परफॉर्मेंस को चेक नहीं करेगा, ये आपको एक्साइटिंग प्राइजेस भी देगा. वेयर यू विल गेट मैक एयर बुक एज द फर्स्ट प्राइज, यू विल गेट iPad mini as the second prize, AirPods as the third prize, and top 100 rankers will also get Amazon vouchers of ₹1000. So do note down the date, 16 December at 6 PM. अगर आप इसको एनरोल करना चाहते हैं तो गो टू द अनअकैडमी वेबसाइट और गो टू द अनअकैडमी ऐप, या फिर नीचे वीडियो के नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी. इफ़ ये अनलॉक कूपन आपसे पूछता है व्हाट इज द अनलॉक कोड और द कूपन, यूज ESE5 लाइव टू अनलॉक इट. राइट गाइज, सो आज हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल डिस्कस कर लिया है एंड विल बी स्टडिंग दिस थिंग लाइव एवरी डे एट 4 o'clock, जहाँ पे हम लोग थ्योरी के साथ साथ
न्यूमेरिकल्स को भी कवर करेंगे. सो विल बी कवरिंग थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स इन दीज सेशंस. वेरी यूजफुल. सो आई होप आज का सेशन आप लोगों को क्लियर हुआ, एंड इन दिस मैनर हम लोग ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर करेंगे यूट्यूब पे ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. थैंक यू सो मच गाइस. आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा. डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू लाइक दिस चैनल. Thank you so much. Wish you all the very best for all your upcoming examinations, and bye bye. Take care.